Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the topic Reflections on the Reawakening East. In previous lecture, I talked about the rise and fall of the empires in the world. Today I will show you some maps of the great empires which ruled in their own time. The first map is of the Ottoman Empire. As I mentioned earlier, the Turkish Muslim Caliphate took over the Roman Empire when they had the downfall. They are also referred as the Ottoman Empire. They ruled this land from 1300 till 1683. All the green part shows that this was it was ruled under Ottoman Empire. This map is of the Roman Empire. All the red part of the map shows that the Roman Empire ruled this part of the world at its height. This map is of the Tang Dynasty ruling in China. All the dark orange color shows that. The supremacy of the East was not only military, but science, philosophy, poetry and the arts also flourished in China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism. It tells us that supremacy of the East was not only limited to military, यानी military power होना ही supremacy की कोई guarantee नहीं है. You need to be advancing in science, philosophy, poetry and arts and culture and everything. So China and Islamic world were progressing in these areas, and that's why they were supreme powers of the world. At the same time, when they were advancing in this world, Europe was sunk in barbarism. Barbarism means not to be able to live in civilized society. यानी जहालत के ज़माने को barbarism कहते हैं. Europeans with unpardonable insularity call this the Dark Ages. The Europeans के जहन में और उनकी हिस्ट्री में ये लिखा गया है without any doubt और किसी भी शक के बगैर कि ये ज़माना उनके लिए एक Dark Ages की तरह था. But it was only in Europe that it was dark indeed in Christian Europe, and it is clear at that particular time all the countries which are coming under Europe and in the Christianity, they were considered to be sunk in the darkness. Not the other countries which were under Muslim rules. For example, Spain, which was Mohammedan, had a brilliant culture. Spain was part of Europe, but it was under the rule of Muslims. This is a map showing the Umayyad Caliphate in Spain, and it was under the rule of Arab. वहाँ के लोग यहाँ पे आके बस गए थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया था. This was called the good time of Spain. This is the building and the architecture showing in Spain of the Muslim culture. This is again the architecture showing that how the glorious past of the Spain was according to the Muslims. These are the inscriptions and the carvings in the Mosque of Spain. Now we will come down to another point of view regarding Bertrand Russell, the age of science, technology and imperialism. This is another heading which I have given to this paragraph. The Western world, however, gradually climbed out of the abyss of barbarism. Abyss of यानी कि घाटी, जहालत की घाटी से वो लोग बाहर निकल आए. There was a reason behind it. Columbus and Vasco de Gama were the pioneers of the new Western imperialism, and scientific technique was its main weapon. These two people actually took out the West from their barbarism age. वो कैसे? वास्को डी गामा और कोलंबस में दोनों एक ही बात थी कि ये वॉयजर्स थे. ये बहरी जहाज़ों में समंदर में वॉयजेस करते थे और नया एरिया एक्सप्लोर करते थे दुनिया का. अकॉर्डिंग टू देम न्यू एरियाज इन द वर्ल्ड. Of course, the people were living on those areas, but what they did was something which brought imperialism rule of Western society in this world. ये imperialism rule क्या है? I will explain you further. Columbus and Vasco de Gama were the pioneers. Pioneers means the first person who started something of the new Western imperialism, and scientific technique was its main weapon.
Because of the science which developed in West in 16th century, 18th century and 16th century, it is what actually helped them to advance further in the world. The East, which had led world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, completely outdistanced by the West. From the beginning of the 16th century onwards, so 16th century it is. So it is said that the West ruled over the world with this thing that is called scientific technique. Scientific technique का मतलब कि उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, साइंस में इतना तेज़ी से आगे बढ़ गए कि बाकी दुनिया को पीछे छोड़ दिया. और ये कह रहे हैं कि ईस्ट जो दुनिया को लेकर चल रहा था और इट वॉज लीडिंग द वर्ल्ड इन साइंस बिफोर द राइज ऑफ ग्रीस एंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, यानी कि ग्रीस के उठने से पहले भी ईस्ट का ज़माना था और फॉल ऑफ रोम के बाद भी ईस्ट का ज़माना था. इन दो टाइम्स में जब ईस्ट दुनिया को रूल कर रहा था तो उससे भी आगे बढ़ जाने वाली कौम वेस्ट उस वक्त बनी जब 16th सेंचुरी और उसके आगे उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए दुनिया में अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया. वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, और ये एक दूसरा इनका टूल था, वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that how western influence became dominant throughout the world. इसके लिए कोलंबस और वास्को डी गामा ने काफ़ी उनकी हेल्प की. ये दो वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे एरियाज़ दुनिया के सर्च किए, बल्कि सर्च क्या किए, जब वो वॉयजेस पे निकले तो वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो इतने लोग सिविलाइज नहीं थे, एंड दे गॉट फ्रेंडली विद देम एंड देन द imperialism rule started. This is Christopher Columbus. The explorer Christopher Columbus made 4 trips across the Atlantic Ocean from Spain in 1492, 1493, 1498 and 1502. इनकी 4 voyages का जिक्र किया गया है यहाँ पे. He was determined to find a direct water route west from Europe to Asia, but he never did. Instead, he stumbled upon the Americas. ये इंडिया की तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन अमेरिकाज के कॉन्टिनेंट्स की तरफ पहुंच गए, यानी कि नॉर्थ और साउथ ऑफ अमेरिका. दो ही डिड नॉट रियली डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ पीपल ऑलरेडी लिव देयर. हिज जर्नीज मार्क द बिगनिंग ऑफ सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. कॉलोनाइजेशन ये क्या चीज़ है? ये इम्पीरियलिज्म से रिलेटेड है. इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड. आई विल एक्सप्लेन इट further that what is imperialism and what happens in colonization. Now this is the picture of Vasco de Gama. His discovery of the sea route to India opened the way for an age of global imperialism and enabled the Portuguese to establish a long lasting colonial empire in Asia. यानी इन दोनों लोगों की वजह से कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म का रूल स्टार्ट हुआ जो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो गया. Now, the question is, what is the concept of imperialism? The policy of extending the rule or authority of an empire or nation over foreign countries or of acquiring and holding colonies and dependencies, advocacy of imperial or sovereign interest over the interest of the dependent states. Imperialism में होता क्या है कि एक ताकतवर मुल्क अपना इख्तियार दूसरे मुल्कों पे करता है विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट उनके लिए माने नहीं रखता, बल्कि वहाँ के रिसोर्सेज को लेना, टू यूज़ देयर रिसोर्सेज एंड मेक द पीपल डिपेंड ऑन देम. दिस इज़ व्हाट दे डिड. द गुड एग्जाम्पल इज़ द कॉलोनी द ब्रिटिशर्स मेड इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक खित्ता था, it was a one big subcontinent. At that particular time, Britishers had the imperialistic rule over subcontinent and they made the colony in the subcontinent. वहाँ यहाँ आके इन्होंने स्पाइसेस लिए और यहाँ पे सारी गवर्नमेंट पे इन्होंने अपना इख्तियार जमा लिया. They never shifted to subcontinent truly or wholly, but they don't need to.
इम्पीरियलिज्म में होता ही यही है कि ये अपने मुल्क में बैठ के दूसरे मुल्कों को चलाते हैं, अपने अंडर रखते हैं उन्हें, और उनकी अपने राइट्स का उनको ख्याल नहीं होता, बल्कि अपने ही फ़ायदे का वो सोचते हैं. It all started in subcontinent with the last Mughal ruler who actually was sold to the British फॉरेनर्स जो आए थे ट्रेडिंग के लिए और वहाँ पे फिर कॉलोनी बना के सेटल हो गए. एंड यू नो द हिस्ट्री रिगार्डिंग सब कॉन्टिनेंट. इम्पीरियलिज्म सिर्फ यहाँ पे नहीं थी, बल्कि उन्होंने दुनिया में बहुत जगह अपना हाथ बढ़ा के ऐसे मुल्कों पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और बल्कि की भी थी काफ़ी अरसे, जहाँ पे उनको लगता था कि सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है और ये हमसे कमज़ोर हैं और हम इनसे आगे हैं, तो हम इनके ऊपर बैठ के हुकूमत करेंगे अपने घर से और इनके रिसोर्सेज अपने लिए इस्तेमाल करेंगे. तो इसका जो स्टार्ट था वो कोलंबस और वास्को डी गामा की वजह से हुआ था, और इम्पीरियलिज्म रूल इस तरह से काफ़ी अरसे तक दुनिया में इस्टेब्लिश हुआ. फिर एक वक्त आया कि इम्पीरियलिज्म रूल को भी ख़त्म होना पड़ा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल नथिंग लाइक दिस विल स्टे फॉर एवर. सब अपने इख्तियार और अपने मुल्क में आज़ादी की जंग फिर लड़ते हैं. दैट विल कम लेटर इन द लेक्चर. I think imperialism is clear to you all. I will show you one diagram. It will make your concept more clear. This is England ruling from his own country, and look at all the octopus hands. That how the England has stretched its hands in all the areas of the world where they can have the best of that country. इंडिया आए थे स्पाइसेस के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे ममालिक और मुल्कों में ये लोग गए थे और उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और वहाँ से उनके बेहतरीन रिसोर्सेज अपने लिए उन्होंने लिए थे, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज थे, क्योंकि वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे. सो दे वर एबल टू डू दैट, एंड दिस इज़ कॉल्ड imperialism, the Western imperialism which started from England. Thank you. This is for today.